Okay, so we were looking at what is moving coil galvanometer. हमने इसके डिटेल्स पिछले चैप्टर में देखे हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरी क्विकली हाउ डज इट वर्क. तो बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था. तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब देयर इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is pointing from north to south, north pole to south pole as shown in figure. Then we have insulated copper wire, और उस कॉपर वायर का हमने वाइंडिंग किया हुआ है, और ये जो वाइंडिंग है ये मैग्नेटिक फ्रेम पे है, मतलब एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया है हमने, उस पे वायर को वाइंड किया है. और ये जो कॉइल है, बेसिकली वाइंडिंग है, इसको हमने सस्पेंड कर दिया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. तो जब भी इसमें से करंट पास होगा, वी ऑलरेडी नो कि बी सी और डी ए साइड पे देयर इज नो फोर्स, ए बी और सी डी साइड पे देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. तो उस पर टॉर्क एक्ट होगा, और ये जो टॉर्क है ये कॉइल को रोटेट करवाएगा. इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. एंड दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टोडी इज इक्वल टू, हमने कल ही देखा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बी इंटू आई इंटू ए. तो अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो नीचे जो हेलिकल स्प्रिंग है, जो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल से बना हुआ है, इफ द कॉइल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज तो हेलिकल स्प्रिंग विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. तो ट्विस्ट होगा वो, राइट. तो दैट twist in the helical spring will provide restoring torque, and that restoring torque tau c या tau k जैसे भी डिनोट करो आप, is proportional to angle of deflection, and this restoring torque is equal to some constant k into theta. Under steady conditions जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल थिंग. हमने इसके ऊपर एक पॉइंटर लगाया था जो हमको करंट का रीडिंग देगा. मैंने करंट पास किया, कॉइल रोटेट हुआ तो पॉइंटर भी मूव होगा. तो अगर पॉइंटर मुझे 10 एम्पियर का रीडिंग दिखा रहा है और जब मैंने करंट बंद कर दिया तो द पॉइंटर शुड गो बैक टू जीरो. तो इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होना चाहिए. अगर रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा हुआ तो पॉइंटर विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, -1 एम्पियर दिखाने लगेगा फॉर एग्जाम्पल. अगर रिस्टोरिंग टॉर्क कम हुआ तो इट विल बी स्टक समवेयर हियर एट 1 or 2 एम्पियर. ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये पता होना चाहिए आपको. तो दिस टू शुड बी इक्वल, सो आई कैन जस्ट कंप्यूट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन बी आई ए विथ रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू एन बी आई ए. तो मैं आई को अलग से लिख लेता हूं, एन बी ए आई बाई के. एन कांस्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है. तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, राइट. हेंस यू कैन यूज such instrument to measure currents, since deflection produced is proportional to the current that is passed through the coil. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये. सो विल जस्ट राइट इट डाउन क्विकली. हमने बाकी डिटेल्स कल देखे ही थे लास्ट लेक्चर में. सो विल जस्ट क्विकली मेक नोट्स फ्रॉम दिस. जस्ट अ मिनट. ओके, तो आई विल बी जस्ट राइटिंग डाउन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमको बहुत शॉर्ट में लिखना है ये. बाकी डिटेल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे ही हैं. सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एज यू नो, moving coil galvanometer consists of a light rectangular coil ABCD of thin
insulated copper wire with many turns wound on a magnetic frame of aluminium. कॉपर फ्रेम भी यूज करते हैं बट नॉर्मली एल्यूमिनियम यूज होता है बिकॉज एल्यूमिनियम इज चीपर देन कॉपर ऑफ कोर्स राइट ऑफ एल्यूमिनियम ओके राइट क्या होगा कि ये जो कॉइल है द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली inside an external magnetic field so the coil is suspended so that it can rotate just a minute I just need to orient things a little bit so that it can rotate freely so that it can rotate freely sorry in a uniform radial magnetic field okay right then ये जो सस्पेंशन हमारे पास है the coil is suspended it is suspended with the help of a thin phosphor bronze wire so the rectangular coil ABCD is suspended by means of a thin phosphor bronze wire suspension the other end of the coil is connected to phosphor bronze helical spring capital H and it serves the purpose of leading the current in and out तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है बेसिकली यहाँ से आप करंट इन और आउट कर सकते हो leading the current in and out of the coil correct तो बहुत इजी है we'll just in short write down it's working now okay so what we can do is we know that when a current I is passed through the coil a torque acts on the coil which tends to rotate it this torque is called as deflecting torque and is given by तो ये जो टॉर्क है
जो coil पे act करेगा, which tends to rotate the coil, is called as deflecting torque and is given by tau d is equal to n b I a, where n is number of turns of the coil, a is area of the coil, b is external magnetic field, b is external magnetic field, I is current to the coil, वो पहले ही बता दिया हमने, a is area of the coil, right? तो ये हमने already derive करके रखा है, that's why I'm not going to talk about this in detail. ओके अब क्या है कि जैसे कॉइल रोटेट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो वायर है वो भी ट्विस्ट होगा, राइट? और वो जो ट्विस्ट है दैट विल गिव अस नेसेसरी रिस्टोरिंग टॉर्क. So as the coil is deflected, the phosphor bronze helical spring or wire, the phosphor bronze helical spring, or you can say wire, is twisted. This twist provides necessary restoring torque, provides necessary restoring torque. Okay, this torque is directly proportional to this torque is directly proportional to the deflection, that is theta, वो मैं लिख दूंगा बाद में, to the deflection theta of the coil. This torque is called as restoring torque and is given by, so this torque is proportional to deflection, that is theta, and this is called as restoring torque and is given by, so we have to move to next page to write it down. Okay, तो बेसिकली ये जो टॉर्क है इसको डिनोट कैसे भी करो, यू कैन से टो के इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, देन यू कैन से टो के इज इक्वल टू के थीटा, where let me say equation number 2 and let us call this as equation number 1, and where k is constant of proportionality called as twist constant or spring constant as well. So where this k is constant of proportionality, तो इसको अलग अलग नाम है, so where k is constant of proportionality, okay, simple. And what we know is for equilibrium of the coil, so for equilibrium of the coil, you have this deflecting torque is equal to restoring torque, so deflecting torque is equal to restoring torque, so tau d is equal to tau
K. Tau d is N I B A. This is K times of theta. Therefore, you can write down theta is equal to NBA by K into I. Right. So बहुत simple है. Therefore, what you can say is therefore theta is proportional to I. Right. Since all other are constants. तो इतना आपको पता होना चाहिए. It's a pretty simple thing. Right. Next, what we want to see is अभी हमारा अगला जो टॉपिक है इज अ वेरी कॉम्पैक्ट टॉपिक विच इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में सीखा है वैसे अभी हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखना है. इट्स वेरी सिंपल. इफ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस टू एल, दैट मेक्स अप एन इलेक्ट्रिक डायपोल. और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आपने डिफाइन किया था P into 2L, right? So I mean 2L into Q, something like that. So let's see what is magnetic dipole moment. और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया है, तो यू शुड रिमेंबर. ओके, तो अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले यू शुड रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, good. If you don't remember, you have to go cross check and I mean you have to see what is electric dipole moment, right? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था, हमारे पास दो चार्जेस थे इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस टू एल. ये एल ओरिजिन से, तो टोटल डिस्टेंस टू एल. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज बेसिकली डिनोटेड बाय p, दैट इज गिवन बाय 2l into q, है ना. ऐसा वो था. तो सिमिलरली जब हमने टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया, इफ यू रिमेंबर, टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास आया था एन बी आई ए साइन थीटा. कल ही मैंने बताया साइन थीटा कहाँ से आता है. तो इसमें अगर मैं इस टॉर्क में मैं एन आई ए को अलग लिख देता हूँ, बी साइन थीटा लिख देता हूँ, तो what I get is this term, number of turns multiplied by current multiplied by area of the loop, that is called as magnetic dipole moment. It's exactly similar. अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इक्वेशन सेम ही बनता है. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, तो आपको याद होगा टाउ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल was P E sin theta. यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यहाँ पे N इंटू आई इंटू ए ये मैग्नेटिक डायपोल होगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ म्यू. सो दिस म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो टॉर्क विल बी म्यू बी साइन थीटा. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क था इट वाज P बार क्रॉस E बार. तो मैग्नेटिक फील्ड पे जो टॉर्क होगा, मतलब मैग्नेटिक डायपोल पे जो टॉर्क होगा, दैट इज म्यू बार क्रॉस बी बार. तो एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे है. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट. बहुत सिंपल है. हमने ऑलरेडी देखा कि व्हेन यू हैव अ करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज गिवन बाय एन बी आई ए sin थीटा. इसमें मैंने एन आई ए को अलग लिखा है, बी sin थीटा को अलग लिखा है. एन आई ए मतलब this quantity is called as magnetic dipole moment. In vector notation it is given by tau bar equal to mu bar cross b bar. Simple है. So it is extremely simple. Okay, बहुत easy है. तो we will keep our language very simple. से पता होना चाहिए कि mu is called as magnetic dipole moment and it is given by n into I into a. So this is what you should be knowing in short. And we'll keep our language very precise. We don't want to make things complicated.
So we know that the torque acting on a current carrying loop inside an external magnetic field is given by. So what we know is that tau is n I A B sine theta. Correct? Okay. So what we can do is we can define n into I into A as magnetic dipole moment. We can define and you should know और एक चीज बताना रह गया. I told you mu bar is a vector quantity and that has the direction of n cap और n cap क्या था मैं बता देता हूँ. If you have a coil, ये coil है जो external magnetic field में रखा हुआ है, इसको जो perpendicular draw करोगे वो है n cap. So the direction of mu magnetic dipole moment is same as that of n. Okay, so mu bar is in the direction of normal to the coil. ये बताना चाहिए. So I'll just write little bit precise on the spot. थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा. We will do it easy. So this current carrying coil, this current carrying coil can be described with a vector quantity with a vector mu bar. Okay, its magnetic dipole moment, its magnetic dipole moment, the direction of mu bar is in the direction of normal to the plane of the coil. The direction of mu bar is in the direction of normal to the coil and its magnitude is given by, so the magnitude of mu is given by and its magnitude is given by mu is equal to NIA, right? Of course, where n is number of turns, we already know that. I is current to the coil and A is area of each turn. So where n are number of turns, I is current through the coil and A is area of each turn या फिर area of the coil भी बोल सकते हो, area of each turn, each turn, right? Okay, then what we can say is अगर हमने इस कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क तो ऑलरेडी है उस पर हमने मेंशन किया है. सो देयरफॉर द टॉर्क acting on the coil can be written as the torque acting on the coil can be written as tau is equal to NIA को बना दिया mu
और b था और sin थीटा. Therefore in vector notation we can write down torque tau bar as mu bar cross p bar. ओके, सो इतना ही इम्पोर्टेंट है इस चीज में. तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट वेरी क्विकली. हमको देखना था व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. हमको पता है दैट इफ यू कीप अ करंट कैरिंग कॉइल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज गिवन बाय NIBA sin थीटा. NIA को मैंने डिफाइन कर दिया. Magnetic dipole moment and its direction is in the direction of perpendicular to the plane of the loop, right? So torque becomes mu b sin theta. So torque in vector notation is tau bar equal to mu bar cross b bar. So extremely simple topic tha. There's nothing in that. Okay, let's move to next topic. आपको याद होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था. हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को we have kept this electric dipole inside an external field and हमने कैलकुलेट किया था कि what is the potential energy of that electric dipole. तो यहाँ पे भी देखना है magnetic potential energy of a dipole. So we want to see what is magnetic potential energy of the dipole. Magnetic potential energy of a dipole. तो यहाँ पे भी we will keep it as precise as possible. हम इसको short ही रखने वाले हैं. We don't want to extend things unnecessarily. तो if you remember, नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं. Doesn't matter really. If you remember, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे. These are electric field lines. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल को प्लेस किया हुआ था और ये डाइपोल का ओरिएंटेशन है. डाइपोल पे एक चार्ज था प्लस क्यू और एक था माइनस क्यू. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. ओके, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पता होना चाहिए. तो इस पे एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F1 which is equal to minus q into E. Okay, both are equal and opposite and they are acting at two different points. So they will tend to rotate. ये जो दो forces है, they will tend to rotate the dipole. वो dipole को rotate करेंगे. हमको इस टॉर्क को, जब भी रोटेशन आया मतलब टॉर्क आया, हमको अगर इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल रखा हुआ है उस पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उसके से जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब टॉर्क है, उस टॉर्क को अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है तो हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, राइट. एंड वो जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो वर्क डन करेगा. लेट्स से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये p बार का डायरेक्शन होता है, ये e बार का डायरेक्शन है, राइट. सो द डायरेक्शन एंगल बिटवीन p बार एंड e बार इज थीटा, करेक्ट. मुझे क्या करना है, मैं एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा हूं और वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, वो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो डाइपोल को रोटेट करवाएगा फ्रॉम सम इनिशियल एंगल थीटा 0 टू थीटा. वापस से कॉन्सेप्ट समझ लो. एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. एक पे फोर्स होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरे में होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मतलब इन दोनों
चार्जेस पे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस है एंड हेंस दे विल टेंड टू रोटेट, मतलब वहां पे एक टॉर्क है। इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करना है तो मैं एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा। एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, इनिशियल एंगल थीटा 0 से थीटा एंगल तक ले जाएगा। किसको ले जाएगा, इस डाइपोल को ले जाएगा, मतलब वर्क हैज टू बी डन। फिर हम लोग बोलते हैं द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क ई एक्स टी, टू रोटेट थ्रू एंगल ऑफ थीटा, इसलिए इंटेंशन थीटा पे होता है, फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, करेक्ट, इज गिवन बाय, और हमको पता है एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू, ये जो इंट्रिंसिक टॉर्क आ रहा है यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क एंड दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आर इक्वल। फिर आप लिखते हो थीटा 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो, पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, थीटा 0 टू थीटा। फिर आप बोलते हो वर्क डन एस पी ई cos theta 0 minus sin minus cos theta, right? So you should remember that ultimately this work done is stored in the form of potential energy, right? And I can write down this equation for potential energy or work done in a very precise notation, that is U bar is equal to minus P bar dot E bar. ये हमने स्पेशल केस के अंडर देखा था, that the potential energy stored in an electric dipole is given by minus P bar dot E bar, है ना? Similarly, ये सारा कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक डायपोल पे भी अप्लाई कर सकते हो। वी आर नॉट सपोज टू डिराइव इट, हमको डेरिवेशन नहीं करना है इसका, हमको सिर्फ बोलना है वी नो दैट फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा होता है, तो फॉर मैग्नेटिक डायपोल आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज यू बार इक्वल टू माइनस पी था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमारे पास म्यू है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डॉट ई बार था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम लेंगे डॉट बी बार विच इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको सिर्फ बोलना है दैट वी नो दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के केस में पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस पी बार डॉट ई बार, मैग्नेटिक डायपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस म्यू बार डॉट बी बार विच इज माइनस म्यू बी कॉस थीटा, राइट। फिर हम स्पेशल केसेस ले लेंगे, हम बोलेंगे मैक्सिमम कब है मिनिमम कब है, तो अगर एंगल की वैल्यू 0 हुई, मतलब एंगल की वैल्यू 0 मतलब डाइपोल म्यू और मैग्नेटिक फील्ड भी दे आर इन सेम डायरेक्शन, है ना? तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, बाय द वे आई मेड अ स्मॉल करेक्शन, आई नीड टू मेक अ स्मॉल करेक्शन, potential energy is not a vector quantity, by the way, yes। तो अगर both mu bar and b bar are aligned in the same direction, then you have potential energy as minus mu b, so this is minimum energy। if theta is 180 degrees, तो इस केस में आपको म्यू मिलेगा माइनस म्यू बी कॉस ऑफ 180 अगेन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा प्लस म्यू बी, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इस केस में हमको क्या करना है, नथिंग, हमको सिर्फ बोलना है हाँ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के केस में देखा था, क्या देखा था, u बार इज इक्वल टू माइनस पी बार और ई बार। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार, मतलब माइनस म्यू बी कॉस थीटा। अगर एंगल 0 होगा तो u इज माइनस म्यू बी, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एंगल 180 होगा मतलब बी बार और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे आर अपोजिट डायरेक्टेड, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस म्यू भी होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। दैट्स ऑल यू आर सपोज टू राइट डाउन, नथिंग एल्स, इतना ही है, राइट। सो वी आर नॉट सपोज टू डिराइव दिस, बट डिराइव कर सकते हो ऑन द सिमिलर लाइंस। अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो गो बैक एंड सी exactly on the similar lines you can derive this, so you have to do this for yourself, तो derive खुद कर सकते हो if you want।
Okay, so a magnetic dipole freely suspended in a magnetic field possesses magnetic potential energy because of its orientation in the field. We know that, or we have seen that in electrostatics, the potential energy of an electric dipole in an external electric field E bar is given by of an electric dipole, right, is given by, तो हमको ऑलरेडी पता है, what we know is, just a minute, mu bar is equal to minus p bar dot E bar is the potential energy of electric dipole, where p bar is electric dipole moment, electric dipole moment, right? So we can write down similarly. Similarly, the potential energy, just a minute, right. Similarly, the potential energy of a magnetic dipole in an external magnetic field V bar is given by U bar equal to minus mu bar dot B bar, which is equal to minus mu B cos of theta, where theta is the angle between, where theta is the angle between mu bar and P bar, right? So let's discuss special cases. So case 1, as I told you, मिनिमम कब होगा मैक्सिमम कब होगा ये देखना है हमको. So case 1 is if angle is 0, then if theta is 0, what we have is u, I am sorry I'm writing u bar again and again, I'm really sorry for this, I don't know, I am totally in vector mode today. Energy is never a vector quantity, it is a scalar quantity. मैंने कहीं और लिखा होगा तो please don't mind, just change it. So u is equal to minus mu b, correct, because cos 0 is 1. Okay, so this is minimum potential energy, this is the minimum potential energy of a dipole, of a magnetic dipole, of a magnetic dipole
in a magnetic field, in a magnetic field, right? Now let's see case 2, that is what is the maximum. Let me just make some space because I don't want to use next page. Okay, so let's see case 2. Case 2 is simple again. If theta is 180, matlab magnetic dipole moment and magnetic field, they are anti-parallel to each other. That is equal to plus म्यू बी, क्योंकि माइनस म्यू बी कॉस ऑफ 180 इज -1, तो वो आप खुद कर लोगे, मैं ऐसे समझ रहा हूँ. सो दिस इज maximum potential energy of a dipole in an external field. So this is maximum potential energy of a magnetic dipole. This is the maximum potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field, right? So far so good. So what we did today was बहुत easy है. हमने आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वापस रिवाइज किया, नेसेसरी नोट्स बना लिए. Then we saw what is magnetic dipole moment, and then what is the potential energy of a magnetic dipole when kept in an external magnetic field, right? So I wanted to start next topic, which is Biot-Savart law, but it will take a little bit of time. So I will be stopping here and we'll continue in next session.